100 questions, 2 long answers, and just 2 hours to complete all of that. How will I manage it? That's the very question every person asks who's preparing for their CLAT PG paper. But worry not, friend, because here I am with the second part of my comprehensive CLAT PG strategy, in which I will focus upon the subjective part of the question paper. I will talk about the paper pattern, the 2019 question paper, the points that you need to remember for your exam, and my suggested method as to how you should write your subjective answer. Apart from that, I will also be launching a second video in which I will talk about 2 sample answers. So do click that subscribe button and do push that notification bell that you don't miss that video. Just a small announcement. I'm happy to announce the creation of our website sambhavlaw.com, in which you will find a detailed analysis of more than 75 case laws along with 10 mock test papers which have been handcrafted by our team for your CLAT PG preparation. So do stay tuned for the launch of our website that will be announced on our channel very soon. Now without any further ado, let's begin with the video. Now let us talk about the paper pattern of the CLAT PG paper. Here you will see that the total marks of the paper are 150 and the duration for the examination shall be of 2 hours. In these 2 hours, we have to attempt 2 sections, where the first section shall be of a multiple choice questions, where there will be 100 questions in total for 1 mark each if you mark the right answer. If you mark the wrong answer, 0.25 marks will be deducted. Now further, when you look at the important part for this video, that is the subjective question, you will see that you have to write 2 essays. Out of 5 options, you have to select 2. And after that, each of those essays can fetch you a maximum of 25 marks each. The word limit shall be of 800 words maximum, making the total section of 50 marks in total. The topics for the subjective questions shall be of law and contemporary issues, which means that you have to focus upon the recent case laws and the contemporary debate that has been going around inside India. What are those topics that are important? And the legal debate is going upon on those topics. You have to talk about those. Now, when you further look at the paper pattern, you will see that there is a caveat. It is written that the candidates who score 40% marks, 35% marks in the case of SC, ST and PWD students in their objective section, which is the multiple choice question section, they will only qualify for their evaluation of answers in the descriptive section. What this means is कि मान लीजिए there are 2 students, one scores 40 marks in the multiple choice question and the other scores 39 marks in the multiple choice questions. वहां पर जिस बंदे ने 40% स्कोर करा है उसके आंसर्स चेक होंगे सब्जेक्टिव वाले, और जिसने 39 करा है उसके चेक नहीं होंगे. सो यहाँ पे सीधे सीधे जिसने भी 40% स्कोर करे वो सीधे सीधे एडवांटेज पर है. सो मेक श्योर कि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एटलीस्ट दैट यू आर स्कोरिंग 40% मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन. और कभी कभी ऐसा होता है दैट यू आर नॉट श्योर एज टू व्हाट द आंसर इज, यू आर गेसिंग अ पर्टिकुलर आंसर. तो उस केस में सब कुछ टैली करने के बाद एक बार निकाल लीजिए दैट यू आर स्कोरिंग 40% मार्क्स, देन ओनली टर्न टुवर्ड्स योर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन. बिकॉज जितना मेहनत आपने करी हो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में, जितने अच्छे आंसर्स आपने लिखे हो, इट वोंट मैटर अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आते हैं, बिकॉज वो पार्ट आपका चेक नहीं होगा. सो मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट स्कोर 40% मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव सेक्शन. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सिलेबस, here you will see that emphasis has been placed upon constitutional law. Why constitutional law? As I said before in my previous video, that constitutional law is the bedrock of law itself. कोई भी केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, बी इट अर्नब गोस्वामी केस, बी इज स्वाम लॉज, बी इट अबॉर्शन लॉ, कोई भी लॉ आता है, इट इज चेक्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. आर्टिकल 14 वायलेट होगा, 19 वायलेट होगा, 21 वायलेट होगा. सो अकॉर्डिंगली आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बहुत आपका प्रायोरिटी लिस्ट पे होना चाहिए. एंड अकॉर्डिंगली अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अच्छा है, दैट विल रिफ्लेक्ट अपॉन योर सब्जेक्टिव आंसर. बिकॉज सब्जेक्टिव आंसर में कोई भी आंसर आप लिख रहे हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेंशन करोगे ही, ऑब्वियस सी बात है. तो जितनी अच्छी आपकी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अकॉर्डिंगली वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी आपके आंसर में. तो मेक श्योर दैट यू फोकस अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ द मोस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू टॉक अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल jurisprudence. Jurisprudence is one of those subjects which if you study इट इन अ मैनर जहां पे आप उसको एनालिटिकल तरीके से पढ़ रहे हो. व्हाट आई मीन इज कि जब आप कोई टॉपिक तैयार कर रहे हो अपने सब्जेक्टिव आंसर के लिए या फिर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, तो वहां पे ज्यूरिस्प्रूडेंस की थ्योरीज अप्लाई करते हुए चलिए उसके ऊपर कि कौन सी ज्यूरिस्ट ने कोई अगर बात कही है तो क्या वो उस पर अप्लाई होती है, कैसे अप्लाई होती है. बिकॉज एनालिटिकल अगर आप नहीं रखेंगे अपनी अप्रोच तो फिर आप इस एग्जाम में अच्छा से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे. इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रीडिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस, you apply the jurisprudence on the things you are reading and learning.
एंड अकॉर्डिंगली अगर आप सब्जेक्टिव आंसर में ज्यूरिस्प्रूडेंस को थोड़ा इंक्लूड करते हैं, लिखते हैं कि व्हाट वाज द थ्योरी, व्हाट अ ज्यूरिस्ट सेड, उसको आप सपोर्ट करते हो अपने ओपिनियन को, तो वो आपको ज्यादा मार्क्स फेच करेंगे देन एन अदर स्टूडेंट जिसने कि उतना एम्फेसिस नहीं दिया ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर. Apart from that, if we talk about other subjects like administrative law, law of tort, law of contract वगैरह, इनके ऊपर आप केवल बात करो फाउंडेशनल नॉलेज की. अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है इन सब्जेक्ट्स में, देन यू कैन प्रिटी इजिली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इफ यू आर वेल वर्स्ड इन दीज सब्जेक्ट्स. अगर आपको फाउंडेशनल नॉलेज है तो, और अगर आपने रिसेंट केस लॉज अच्छे से तैयार करे हैं, देन आई एम प्रिटी श्योर कि आपका जो सब्जेक्टिव सेक्शन है दैट कैन बी वेरी इजिली सॉल्व इफ यू आर हैविंग जस्ट अ फाउंडेशनल नॉलेज और आपके रिसेंट केस लॉज अच्छे से तैयार है. Now let us talk about the CLAT PG 2019 question paper, the subjective part of that paper. Now let us talk about the subjective part of the CLAT PG 2019 question paper. Here you will see that the first question talks about VVPAT and the EVM machine, and they are asking you to briefly explain and critically evaluate the machines in light of the contemporary developments. Now when you're writing this answer, you have to firstly write what is the EVM machine, what controversy did the EVM machine create, and why was the VVPAT machine introduced, and what judgment did the court make. You have to talk about the arguments that both the stakeholders gave कि EVM machine में खराबियां क्या है, EVM machine में क्यों वो सही है, why it can be hacked, everything you have to talk about that. Then you come towards the recent development जो कि उस टाइम हुए थे 2019 में लोकसभा इलेक्शंस में. उस टाइम क्या कोर्ट में जो डेवलपमेंट्स होते उसके बारे में बात करते हुए फिर आप कंक्लूड करते अकॉर्डिंगली कि why the EVM machine is good or bad for conducting elections, और accordingly अपना आंसर को conclude करते. Now when you come to the second question, here you will see that they are talking about ordinance making power of the government. Now when you look at the question, you will see that they are pointing you in the direction by giving you a particular phrase, fraud on the constitution. This means that you have to talk about the case of Krishna Kumar Singh versus the state of Bihar, और उस केस में क्या चीजें हेल्ड हुई थी, क्या बातें कोर्ट ने कही थी, आपको उस पर फोकस करते हुए चलना है इस पर्टिकुलर आंसर में. सो अकॉर्डिंगली व्हेन यू आर आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, you shall start with what is ordinance, what is the provisions that are given in the constitution regarding ordinance. फिर आप आइए कि कृष्ण कुमार सिंह में कहा क्या गया था, what were the ruling of the court in that case, कौन से dissenting opinions आए थे, क्यों. उसके बाद आप थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं कि what was held in the DC वाधवा केस. उसके बाद फिर आप कंक्लूजन में आते हैं कि क्या ऑर्डिनेंस पावर का मिसयूज हुआ था कि नहीं हुआ था देश के अंदर, और फिर आप अपना सजेशन लिख के इस आंसर को भी कंप्लीट करते हैं. नाउ व्हेन यू कम टू द थर्ड क्वेश्चन दैट टॉक्ड अबाउट विक्टिम कंपनसेशन स्कीम इनसाइड इंडिया. यहाँ पे आपको बात करना था इन द लाइट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड जुडिशियल डिसीजंस. नाउ सी, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बिकॉज विक्टिम कंपनसेशन के टॉपिक में यू कैन राइट मेनी थिंग्स. यू कुड टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, you could talk about the aspect in CRPC जो recent amendments आए थे 2013 में वर्मा कमेटी के, उसके बारे में आप बात कर सकते थे. So the question was quite wide and it was up to you कि आप क्या लिखना चाहते हो. If I would have attempted the question, तो मैं इसमें जस्टिस वर्मा कमेटी का फोकस करते हुए I would have started with कि what is victim compensation, then I will write as to what are the controversies, what are the things that are there is a problem with the victim compensation formula. And after that, I will go towards the recommendation of the Verma Committee and section 357 of CRPC जो इंट्रोड्यूस हुआ था नया 357A, उसकी मैं बात करते हुए फिर कंक्लूड करता कि what can be the improvement that can be made in the victim compensation scheme. और अकॉर्डिंगली आपके ऊपर है कि अगर आप चाहते तो इसमें आप कोई और एस्पेक्ट के भी बात कर सकते थे victim compensation के बारे में. Now apart from that, when you come towards the fourth question, that talks about the generic drugs. यहाँ पे आपसे पूछा गया what is meant by generic drugs and explain its importance in the light of judicial decisions in India. अब यहाँ पे आपको बात करनी थी जेनेरिक ड्रग्स के बारे में एज अ होल एंड द हिस्टोरिकल केस ऑफ नोवार्टिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था फॉर द जुरिस्प्रूडेंस एंड द एस्पेक्ट कि कैसे जेनेरिक ड्रग्स गवर्न होती है इंडिया के अंदर. सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्टली राइट व्हाट आर जेनेरिक ड्रग्स, what was the issue that was with the generic drugs उस टाइम पे, फिर आप बताते कि how that issue was solved by the Supreme Court, what was the judgment that was given in the Novartis case. Then you come towards a conclusion that what can be the things that can be improved with the generic drugs. आपका क्या conclusion होता, was the Supreme Court right, was the Supreme Court wrong, आपका क्या अपना issue था, आपका क्या अपना view था, आप वो लिखते हुए अपने आंसर को complete कर सकते थे. Now when you come towards the fifth question, here you will see that it talks about terrorism and how it is an international issue without any solution.
Now you can see that it has a similarity with question number 3, where it is written that you have to talk about ordinance with reference to Krishna Kumar Singh case. They have given you a statement. यहाँ पर भी they are saying कि आपको इंटरनेशनल इशू के बारे में बात करनी है. You don't have to talk about the domestic front of terrorism. यहाँ पे जब आप अपना आंसर लिख रहे हो तो आप ये बात करो कि what were the laws जो कि फॉल्ट में है, why the international community has failed to solve the problem of terrorism. फिर उसमें आप थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स लिखते कि क्या क्या चीजें हो रही थी उस टाइम, वहां पे कौन कौन से लॉज बन रहे थे, और अकॉर्डिंगली फिर आप उसका अपना कंक्लूजन लिख देते इस पर्टिकुलर आंसर का. Now let us talk about the points that you need to remember while you're preparing for this paper. The first thing is that you need to have an awareness of the legal, factual, and the philosophical issues that are arising from the questions that you choose to answer. जो भी क्वेश्चन आप चूज करते हो आंसर करने को, आपको उसकी 3 एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए. द फर्स्ट इज द लीगल एस्पेक्ट, which means you need to know what the law says, what case laws were there in that particular controversy or matter which you are choosing to answer. जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं सेक्शन 377 के बारे में, then you need to know कि सेक्शन 377 में होता क्या है, सेक्शन 377 में होता क्या है, what is the quantum of punishment, who can file an FIR, these type of things you need to know. Apart from that, the second point is the factual aspect. Here you need to know what is the background of that case, what was the history of that case, उसमें हुआ क्या था, what is the controversy that is associated with it, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए. Then the third part is the philosophical aspect, which means कि जो impact है उस particular controversy का upon the jurisprudence of India and how it is going to evolve that jurisprudence or the legal regime, वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाओगे, थोड़ा अगर आपको अवेयरनेस है तो. Then you come towards the second point. It says that the consortium itself will check the ability to structure your answer. Because see, अगर आपका आंसर it is not like a river, if it is not flowing, तो वो आंसर उतना impactful नहीं होगा compared to a answer which is divided into understandable parts, जो कि properly लिखा गया है, जिसको कि properly structure किया गया है. तो ये बात का आप ध्यान रखें कि when you are writing an answer, you should have an ability that you are able to properly structure that answer. Then you need to clearly set out the various arguments, which means the for and against of a particular topic. The perspectives, it be the legal perspective, the jurisprudential prospect, the philosophical prospect, whichever you want to write, you should need to have a clear understanding of that. And then you need to set out and draw a conclusion based upon the same. मतलब जो आर्गुमेंट्स आपने दिए, जो प्रोस्पेक्टिव्स आपने दिए, उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन अपना बताना आना चाहिए. एंड द कंसोर्शियम हियर इज गोइंग टू चेक योर एबिलिटी कि आप किस तरीके से आंसर को फ्रेम कर पा रहे हो. देन द थर्ड पार्ट सेज दैट द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सी ये एक आर्ट है जो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो. बिकॉज अगर आपको 2 आंसर्स लिखने हैं प्लस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं इन द स्पैन ऑफ 2 आवर्स, इट इज गोइंग टू बी क्वाइट हार्ड. So the more you practice, the more you improve that particular skill. So practice करना यहाँ पे बहुत important है. Apart from that, जब आप अपना आंसर स्ट्रक्चर कर रहे हो तो उसमें आप पहले बताओ कि इश्यूज क्या हैं, ये व्हाट इज द कंट्रोवर्सी दैट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इशू. फिर उसके फैक्चुअल मैटर्स के बारे में बात करो कि उसमें क्या फैक्ट्स इन्वॉल्व थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या हिस्ट्री थी उसकी. Then you come towards the arguments that were given by both the parties, जो for में बोल रहे हैं, जो against बोल रहे, plaintiff and defendant. And then you come towards a conclusion based upon the argument and the factual matters. उसके basis पे आप अपना answer conclude करो. Now when you come to the point of presentation of answer, you need to make sure that when you are presenting your answer, it should be in a neat and tidy manner. What I mean by this is कि अगर आपकी writing खराब है, it is not that good. At least start practicing a month or 2 months before the examination itself, ताकि आपका थोड़ा फ्लो बन पाए राइटिंग का. अगर आपने बहुत दिनों से नहीं लिखा है, then try to make sure that if your writing is not that good, at least increase the line spacing or use a better pen. बॉल पेन की जगह आप जेल पेन यूज करो ताकि आपका जो आंसर है थोड़ा सा वो निखर के आए. बिकॉज जो एग्जामिनर होता है, अगर उसको एक प्लेजेंट कॉपी मिलती है चेक करने को, तो उसका मूड थोड़ा सा खुश हो जाता है, तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से आपको मार्क्स देगा अगर आपकी राइटिंग थोड़ा पढ़ने में आसान है. सो मेक श्योर दैट यू मेक अ नीट एंड टाइडी आंसर व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन. द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर इज कि आप यूज करो हेडिंग्स को इन अ प्रॉपर मैनर. क्योंकि जब आप एक आंसर लिख रहे हो, अगर आप उसको एक कॉन्स्टेंट फ्लो में लिखोगे विदाउट एनी स्टॉप्स और ब्रेक, it would be hard for the examiner to find out
where the issues are, where is the main body, where is the conclusion. So accordingly use headings to identify those parts as to what is the heading, what is the introduction, what is the conclusion. That makes it easier for the examiner to go through your answer properly. Apart from that, you should use blue and black pen combination in order to emphasize over the important points such as the case names, the important quotes, and the jurist names. Because whenever a examiner is checking your copy again, अगर वो जल्दी जल्दी चेक कर रहा है और अगर आपने उसको पहले से एम्फेसाइज करा हुआ है, देन इट इज ईजियर फॉर हिम टू रीड. और जितनी जल्दी वो रीड कर पाएगा, जितनी जल्दी वो आपकी कॉपी को आगे बढ़ा पाएगा, उतनी जल्दी आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो अकॉर्डिंगली मेक श्योर दैट यू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड ब्लैक पेन दैट enhances the look of your copy itself. Apart from that, the fourth point will be that while you are practicing at home, make sure that you practice in a constant flow without cutting out the words. कि मान लीजिए आपने कोई वर्ड गलत कर दिया, that you cut it, फिर आप उसको लिख रहे हो. बिकॉज देखिए वहां पे आपको कोई कीबोर्ड या फिर कंप्यूटर नहीं मिलेगा जहाँ पे आप अपना कोई आंसर लिख रहे हो, फिर आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो कि यस दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, फिर आप उसको एडिट करके आप 800 वर्ड्स का बना रहे हो. वहां पे आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा, वहां पे आपको सोच के लिखना है. सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम, ट्राई टू यूज अ पेन, write it properly, try not to make that much mistakes. और accordingly आप sentence formation भी जब कर रहे हैं, try not to make mistakes when you are forming your sentences accordingly, जिससे कि आपका एक practice बन जाए कि हाँ अगर मैं आंसर लिख रहा हूँ तो मैं अच्छे से लिख पाऊँ without making any mistakes. Now coming towards the next part, we will talk about the time management aspect of the paper. Now I would like to say that firstly you should need to focus upon your time management a lot. पहले ही आप ये डिसाइड कर लो that how much time you need to divide between the objective and the subjective part, be it 50 and 70, be it 80 minutes and 40 minutes, be it जो आपकी खुद की एबिलिटी है कि कितनी जल्दी you can check out the multiple choice questions and you can write the subjective answers. आपके एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप पहले ही टाइम डिसाइड कर लो और फिर उस टाइम के साथ स्टिक करो कि आपने इस पार्ट को इतना टाइम दिया, फिर इस पार्ट को इतना टाइम दिया, जिससे कि आपका पेपर आसानी से हो पाए. Now further, when you're reading a paper, make sure that you read the questions properly and try not to miss a question in a hurry. Because देखिए होता क्या है that when you're reading a paper, you already have so much less time, and it happens that you saw the question paper and you liked the first two questions जो कि आपने देखे. You said कि मैं इन्हीं दोनों का आंसर करूंगा, मैं बाकी क्वेश्चंस देखूंगा ही नहीं. फिर आप जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलते हो, then you realize, oh my god, अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया होता तो मैंने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं यार. सो उससे आपका कहीं ना कहीं लॉस होता है. सो ट्राई टू बी श्योर कि आपने सारे क्वेश्चंस ठीक से पढ़े हों और अकॉर्डिंगली आप उसको आंसर करो. उसके बाद मेक श्योर दैट यू ऑलरेडी डिसाइड कि विच आर द टू क्वेश्चंस दैट यू थिंक आर बेस्ट फॉर यू टू आंसर, जिससे कि आप स्ट्रेटेजाइज कर पाओ अकॉर्डिंगली और उनके स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको आंसर लिख पाओ. उसके बाद इन केस मान लीजिए ऐसा होता है दैट यू आर कंफ्यूज बिटवीन 3 क्वेश्चंस where you are not sure as to कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बेटर है जिस पर मुझे आंसर लिखना चाहिए, then as I talked about in the discussion of the last year's question paper, focus upon those questions जिसमें कि आपको थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है कि आपको इस एस्पेक्ट के बारे में बात करनी है. In that type of question, you can write an answer with a closed aspect, with a focused aspect, and you can write an answer which is according to the examiner itself. जो उसके माइंड में आंसर आप उसके अकॉर्डिंग लिख पाओगे. सो आई वुड प्रेफर द वंस जिसमें कि थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है टुवर्ड्स कि क्वेश्चन में इटसेल्फ लिखना क्या है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टडी गाइड इटसेल्फ, दिस पर्टिकुलर स्टडी गाइड इज मेंट टू बी अ रेफरेंस टू सप्लीमेंट योर आंसर राइटिंग, योर स्किल्स एंड योर टेक्निक्स. बिकॉज सी, in our 3-year and 5-year LLB, we already know how to write long answers. It is not like you don't know कि कैसे long answer लिखना है, क्या उसके parts होने चाहिए, क्या आपका तरीका होता है आंसर लिखने का. आपने बहुत आंसर्स लिखे हैं, सो यू ऑलरेडी नो कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है. तो जो मैं गाइड यहाँ पे बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप उसी गाइड को उसी तरीके को फॉलो करो. अगर जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है जिसमें कि यू थिंक दैट दैट क्वेश्चन could use a better answer structure than what I told in this study guide, go ahead and use that one, because उससे आपको ज़्यादा मार्क्स ही मिलेंगे. ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही जो मैंने स्टडी गाइड बताया आप वो फॉलो करो. सो अकॉर्डिंगली यूज दिस स्टडी गाइड एज अ रेफरेंस, और आपके जो आइडियाज है, जिस तरीके से आप अपना आंसर लिखते हो, उसके अंदर इसको इनकलकेट करके थोड़ा सा उसको एनहांस करो अकॉर्डिंगली. दोस्तों, now further I would like to tell you about some points which I think you need to take into consideration while you are writing your answer.
The first point is that you should avoid including any political angle or comment in your answer. What I mean by this is कि जो examiner होता है, he has some political affiliations, उसके भी कुछ sentiments है political. अगर आप उसको अटैक करोगे, उसको हर्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं वो एग्जामिनर आपसे चिढ़ जाएगा, ही वोंट गिव यू दैट मच मार्क्स. तो अवॉइड करो उस तरीके के आंसर में पॉलिटिकल स्टेटमेंट लिखने से. द सेकेंड पॉइंट इज कि आप अवॉइड करो इस तरीके के कॉन्ट्रोवर्शियल लीगल ओपिनियन देने से जो कि सामने वाले बंदे को थोड़ा सा ऑड लगे कि ये इसने क्या लिख दिया है, और वाज इट इज ही ट्राइंग टू से, लाइक इज इट टोटली एब्सर्ड. ट्राई टू राइट एन आंसर व्हिच इज न्यूट्रल इन नेचर एंड मेक श्योर दैट इट इज टू द पॉइंट. और जो बातें आपको लगता है कि सही है गलत है, केवल आप उनकी बातें करिए, कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स में मत जाइए. Now, apart from that, now let us talk about the suggested method as to how I think you should attempt an answer. Now, let us talk about the suggested method for answer writing. You see, answer writing in itself is an art. You are writing an answer and you show that answer to 3 people, to 4 people. It might happen that they like the answer a lot. But when you show that answer to a 5th person, he might say that the answer is not that good. It may happen that he might have a different perspective as to what should be written in the answer, what should be the language of the answer, what should be the structure of the answer, because every person has a different opinion about what answer writing is, how a question shall be framed, how an answer shall be framed. So accordingly, what I'm trying to say here is that whatever method I'm telling you about in this video to write an answer, do not follow it to the letter. If you find a question in which you think that the method for answer writing should be different, go with that method. Do not follow what I tell you. Go with your instincts and accordingly answer that particular question. Now, when I come towards the answer writing part, I have divided my answer into 4 parts. The first part is the introduction part, in which I will write what is the history of that particular law, that controversy, what is the background of that particular thing, what is the content that particular law has, उसमें क्या लिखा हुआ है. I will talk about that. Now, when you talk about answers like Ram Mandir or Article 370, in those questions you have to mention what is the history and background of that particular thing. Because in Ram Mandir, before you don't write कि how the land was divided, what was the issue with Ram Mandir, High Court ने क्या decision दिया था, you will not be able to frame an answer. आप उसमें आगे नहीं बता पाओगे कि what was the content of the controversy accordingly. After that, when you come towards Article 370, firstly you have to tell what was the condition in which the particular treaty was signed, how was Article 370 added in the constitution, what were the cases like Sampath Prakash case and the Premnath Kaul case, उसमें क्या आया था. Only then you will be able to write a proper introduction कि Article 370 के contents में दिया क्या हुआ है. When you write that, only after that you can come towards the content part. Now, there are still some questions in which you only directly come towards the content, like in the question of adultery. What is the contents of adultery? 497 में क्या लिखा है, उसमें क्या quantum of punishment है, कौन FIR कर सकता है. These type of things don't require you to write a particular history or a background. According to me, if you want to include it, you can definitely do that. But according to me, there are some questions in which it is not required, and then in some questions it is required. So accordingly, you can attempt your question like this. Apart from that, when you are writing your introduction, you can also do one more thing. You can add a attention grabbing line in which you write something that attracts the attention of the examiner itself. He might look at the answer and he might say that this starting is really very good. Because see, when you look at an answer, according to me, the most important parts of an answer are the introduction and the conclusion. If those two things are very well written and very well made, the whole question itself is enhanced. So if you are able to write something that catches the eye or enhances the question, then it would probably fetch you a lot of marks than an ordinary answer. So if you can do that, do go with it. Apart from that, if we come to the second part of the question, I will talk about the issue. I will talk about the why. What is the controversy that has been created by the law, the issue, the legislation? What is the thing that has sparked a debate inside the legal regime? Why is it being brought into the male legal arena? Now, if we talk about adultery, in adultery, section 497 sparked the debate
As to discrimination between men and women, it violates Article 14 and that is why it needs to be struck down. You have to talk about the controversy itself. Firstly, you talk about the introduction, what was the law, what was the background, then you talk about what controversy it created. Accordingly, when you're writing the answer, you can also do one thing. You can allot at least 100 to 150 words to the introduction and 100 to 150 words to the issue itself. That way, the issue and the introduction part will remain a bit small. And when you come to the main body, which is the bulk of your answer, here you can allot at least 350 to 500 words. That way, the structure of the question will be in such a manner that each part is given proper attention and you are able to write each part in its own respective manner in a. Now the next part of the answer is the main body. The structure of the main body depends upon the question that is being asked. अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है that you have to focus upon a case law या फिर आपको point out किया जा रहा है उस तरफ, then you have to write about the case law, what the court said, what was their interpretation, और फिर क्या आपकी ओपिनियन थी कि कोर्ट ने क्या कहा या उसने क्या किया. अकॉर्डिंगली अगर आप याद करेंगे 2019 का पेपर, we talked about the ordinance question. In that question, it was pointed out that we have to talk about the Krishna Kumar Singh case. So accordingly, in that case, we have to talk about what the court said, what was their interpretation, what was the dissenting opinion, etc. Now the other manner in which a question can be asked is कि आपको comment करना है एक particular topic के ऊपर कि उस topic में क्या हुआ, उसमें क्या बातें हैं, दोनों stakeholders का क्या कहना है accordingly. So here I have divided the main body into two parts as to how can the answer be framed. Now when you come towards the first part, उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को आंसर करना है जहां पे आपसे पूछा गया that you have to comment upon a particular topic like anti-conversion law. Now when you're writing about anti-conversion law, you will write your own opinion / argument regarding the matter. What you think, आपको क्या लगता है कि ये मैटर में क्या हुआ, क्या ऐसी बातें हैं जो इस लॉ के फॉर्म में है या फिर अगेंस्ट में है, और यू राइट द कंटेंशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स. आप यहाँ पे ये लिखते हो कि जो पार्टीज हैं टू द केस, उनका क्या कहना है कि ये चीज सही क्यों है, ये चीज गलत क्यों है, आप उसकी बात करते हो. नाउ इन द एंटी कन्वर्जन लॉ यू आर राइटिंग दैट द एंटी कन्वर्जन लॉज पास्ड आर नॉट राइट, दे आर अगेंस्ट राइट टू रिलीजन, दे आर अगेंस्ट राइट टू मैरिज. तो ये चीज जो पार्टीज है ये उनका कंटेंशन है. आपका भी ओपिनियन हो सकता है, आप उसके साथ अलॉन्ग लिख सकते हो. एंड अकॉर्डिंगली जब आप ये चीजें मेंशन करते हो, यू हैव टू सपोर्ट इट बाय रिलेवेंट केस लॉज एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल थ्योरीज. यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट केस लॉ सपोर्ट्स योर पर्टिकुलर थ्योरी और आर्ग्यूमेंट, और कौन सी ऐसी ज्यूरिस्प्रूडेंशियल थ्योरी है जो कि आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती है, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा. और उसके बाद जो आपने लिख लिया दैट एज टू आपको क्या लगता है कि क्या चीज सही है या फिर क्या कंटेंशन सही है या फिर कौन सा ओपिनियन सही है, आप बात करते हो अपोजिंग व्यू के बारे में एज टू अपोजिट पार्टी क्या कह रही है या फिर अपोजिट पार्टी के कंटेंशंस क्या है, और फिर वो कंटेंशंस गलत क्यों है आंसर के अंदर वो आप लिखिए. उसके बाद अगर आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे उसको कैसे आंसर करेंगे, इन दैट यू टॉक अबाउट द डिसीजन और द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट, जो कि होती है प्रेजेंट केस में या फिर प्रीवियस केस में जो उन्होंने कहा था रिलेटेड केस लॉज में, उसके बारे में आप बात करते हैं. कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या था, अगर मान लीजिए उसमें कोई डिसेंटिंग ओपिनियन है तो आप उसके बारे में बात कर लो. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द सबरीमाला केस, इन द सबरीमाला केस देयर वाज अ डिसेंटिंग ओपिनियन बाय जस्टिस इंदु मल्होत्रा. If you support that dissenting opinion, you can write that Justice Indu Malhotra wrote that Article 14 shall be overshadowed by right to religion, and accordingly you give case laws जो कि उनके पार्ट को सपोर्ट करते हैं. आप अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हो एज टू आपको क्यों लगता है कि उनकी बातें सही हैं, फिर आप उसमें रेलिवेंट केस लॉज और ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो थ्योरीज होती हैं वो आप लिख सकते हो. तो अकॉर्डिंगली जो मेन बॉडी होती है उसको आंसर करने के दो तरीके हैं. सो अकॉर्डिंगली जब मैं इस वीडियो का सब पार्ट 2 बनाऊंगा तो उसमें जो दो सैंपल आंसर्स होंगे उसमें से एक सैंपल आंसर बात करेगा फर्स्ट टाइप की उसकी, और दूसरा आंसर बात करेगा सेकंड टाइप के आंसर की कि टॉपिक वाइज कैसे आंसर होगा या फिर केस लॉ वाइज कैसे आंसर होगा. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन इटसेल्फ, हाउ यू हैव टू राइट योर कंक्लूजन एंड सजेशन पार्ट. अ कंक्लूजन कैन बी रिटन इन 3 ways अकॉर्डिंग टू मी, एंड द सजेशन टॉक्स अबाउट द मेथड और द सॉल्यूशन टुवर्ड्स द फ्यूचर. Now, the first type of conclusion can be a summarized conclusion.
that is based upon the arguments and the perspectives of the stakeholders, the courts or the jurists. What I mean to say here is कि आप एक कंक्लूजन लिखते हो जिसमें कि आप समराइज करते हो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को। आप बताते हो कि एक पार्टी ने क्या कहा, फिर दूसरी पार्टी ने क्या कहा, और उसके बाद उसको आप कंक्लूड कर देते हो बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड कोर्ट्स। उनके एग्जांपल्स के थ्रू आप उसको कंक्लूड करते हो। दैट इज वन वे टू कंक्लूड एन आंसर। Now, the second way to conclude an answer is seeking a middle ground between the arguments and the perspectives of the stakeholders supported by relevant case law / arguments. इसमें आप बेसिकली ये बताने की कोशिश करते हो कि एक बीच का रास्ता क्या है, what is the middle ground. You talk about the plaintiff, you talk about the defendant, and then you give a middle ground as to कि आपको क्या लगता है कि प्लेंटिफ के कौन से आर्गुमेंट सही थे, डिफेंडेंट के कौन से आर्गुमेंट सही थे, और फिर कि आपको क्या लगता है कि प्लेंटिफ के कौन से आर्गुमेंट सही थे, डिफेंडेंट के कौन से आर्गुमेंट सही थे, और उसके बीच में क्या मिडिल ग्राउंड लिख सकता है, और उसके बाद अपना सजेशन दे देते हैं। उसके बाद जो तीसरा वे है कंक्लूड करने का, उसमें आप करते हैं क्या, उसमें आप अपना खुद का ओपिनियन बेस करते हैं। That is supported by the points and the arguments from the courts, parties and the jurists. Here what you do is you talk about the opinion of the stakeholders in the main body itself. वहाँ पे आप पहले लिख दो कि क्या arguments थे, और उसके बाद जब दोनों parties के arguments आपने लिख दिए, आप अपने conclusion में फिर बताते हो कि आपका क्या opinion है कि उन दोनों में से कौन सी पार्टी सही है। आप वहाँ पे मेन बॉडी में अपना ओपिनियन मेंशन नहीं करते हो, आप कंक्लूजन में मेंशन करते हो कि आपका ओपिनियन क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, और अकॉर्डिंगली आप उसको सपोर्ट करते हो रेलेवेंट केस लॉज एंड जूरिस के थ्योरीज के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू आर गिविंग अ सजेशन, it should be based upon a method or a solution that could act as a way forward to improve the current legal problem or the regime. Now, for example, if you are writing an answer where you are talking about the anti-conversion laws, you can write an answer where you say that you oppose anti-conversion laws, and accordingly there should be an amendment in the special marriage act जहाँ पे वो जो क्लॉज है जो कि ये कहता है कि आपको पहले पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी और लोग ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, अगर उस चीज़ को हटा दिया जाए तो उसकी वजह से जो एक हैसल क्रिएट होती है वो क्रिएट नहीं होगी, एंड द पीपल वोंट हैव टू कन्वर्ट देयर रिलीजन्स इन ऑर्डर टू डू इंटर रिलीजियस मैरिजेस। कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मैरिजेस भी हो जाएंगी। तो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट हो पाता है देन इट वुड बी अ वे फॉरवर्ड। आप इस तरीके से एक सजेशन दे सकते हैं टुवर्ड्स अ वे फॉरवर्ड। Now, accordingly, I shall be launching another video where I will talk about two sample answers. The first will be based upon anti-conversion laws, and the second will be based upon Sabrimala issue. The link to the video can be found in the description itself. When I will upload it, I will update the